Today we are going to discuss classical theory of income and employment. So before starting the topic, let us first understand what this classical means. Whenever we use in economics classical, what is the meaning, right? So classical actually is classical economics is a school of thought. In fact, classical economics is a term that refers to school of thought for economics in the 18th and 19th century. 18th and 19th century में एक group of people were having a particular thought, economic thought, and that is known as classical thought or classical economics. कौन कौन लोग थे इसमें? You know, David Ricardo, Thomas Malthus, Robert Jacks, John Stuart Mill, J.B. Say, and Adam Smith. These were the main proponents, main economists थे classical school of thought के, right? हालांकि उनके आपस में भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, फिर भी उन सब में एक कॉमन चीज थी. उन कॉमन चीजों को मिला के जो है क्लासिकल थ्योरी हम बोलते हैं, राइट? सो दिस classical, whenever classical is used in economics, you should refer to it as a school of thought. ये एक विचारधारा है हिंदी में अगर बोले तो. It is a school of thought having a particular opinion on a subject, on a topic, right? So this is about the classical economics, and the classical economists mainly focused on these theories, right? They propounded theories to explain value of money, value and price, supply, demand, and distribution. These few topics were the main focus of classical economists during 18th and 19th century. And name of a classical economist are there on the screen, you can see, right? So this is classical economics is simply a school of thought having a particular type of opinion on different economic subjects, economic topics. Okay, is this clear to everyone, students? Yes. Okay, moving on to the second part on the topic itself, a theory, right? Classical we have discussed. Theory, what is a theory? Theory is an idea to explain something or some concept, some phenomena. थ्योरी जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फेनोमेना को, कोई भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझने के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, उसको हम थ्योरी बोलते हैं. और इन सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज आप बोल सकते हैं थ्योरी जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक ओवर सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप को शो करता है. ओवर सिंप्लीफाइड कनेक्शन एंड रिलेशनशिप. जैसा सपोज लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी है, एक लॉ ऑफ डिमांड इज अ थ्योरी, and it is an oversimplified relation between price and quantity demanded, right? So this is what theory means. Theory simply is an idea to explain the concept, to explain something, right? And thirdly, income. All of you know what is income. Income is money received either in money form or in kind form by the individual or by the organization on a regular basis for providing goods or service, right? Or by investing capital, whatever you earn, that is income. Okay, moving on to the last aspect on the topic, right? Classical theory of income and employment. Classical हमने देख लिया, theory क्या होती है देखा, income क्या है देखा, employment. Employment is simply a state of having paid work. आप ऐसा कंडीशन जिसमें आप रेगुलरली आपको पे किया जा रहा है फॉर डूइंग एनी वर्क, एनी जॉब,
right? Or on the other hand, if someone asks you what is a state of unemployment, unemployment kya hota hai, right? Employment is a state of being, having work and getting paid for it, whereas unemployment is a state where a person or an able bodied person, you know willing to work at the current wage rate but not getting the work, is treated as unemployment. ऐसा इंडिविजुअल जो कि बिल्कुल मेंटली फिजिकली साउंड है, काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयड. सो एम्प्लॉयमेंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ that, having work, person willing to work and gets the work, and for it they are paid, right? So this is all about the title, or your title, classical theory of income and employment, right? Here most important focus I want on classical, right? Other three terms are general terms, but classical, the word classical has a particular connotation, particular meaning in economics, right? I hope that you have understood the title. Okay, should I move to the next part? Yes. Okay. Yes, sir. Okay, fine. So moving on to now the classical theory. Starting with, whenever I say classical theory of employment or output and employment, income and employment, first thing comes to our mind is Say's law of market. Because क्लासिकल थ्योरी जो है उसका फाउंडेशन, उसका बेसिस ही सेज लॉ ऑफ मार्केट है. हम देखेंगे अभी सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है. और and it was propounded by JB Say, right? JB Say नाम है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, राइट? और सेम फिलॉसफी को मार्शल एंड पीगो ने आगे बढ़ाया क्लासिकल थ्योरी के, जिसको JB Say ने propound किया था, राइट? तो इसमें क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज डन इन क्लासिकल थ्योरी. क्लासिकल थ्योरी में हम डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट देखते, मार्केट को कैसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, कैसे एम्प्लॉयमेंट जो है होता है, होती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होता है, उसको देखते हैं. और मार्केट को तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है, लेबर मार्केट, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट, राइट? दोज हु आर फेसिंग वॉइस प्रॉब्लम, प्लीज चेक योर इंटरनेट. What about others students? Voice is breaking for everyone. Is it so? No, Yes, sir, you sir. are properly audible. Okay, fine. So those who are facing problem, please adjust your mic. Okay, fine. So this market is divided into three parts, three different markets. Money market, goods market and labor market. Goods market को हम real market भी बोलते हैं, right? तो classical theory के जो है वो particularly based on JB Say's law of market, right? जिसको मार्शल एंड पिगो ने आगे और बढ़ाया, उसमें ऐड किए, और आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करने के लिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जैसा कि हमने अभी बताया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन थे, कौन क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने तीन मार्केट को तीन हिस्सों में बांटा, लेबर मार्केट को, गुड्स मार्केट को और मनी मार्केट को. और ईच मार्केट इन्वॉल्व्स अ बिल्ट इन इक्विलिब्रियम. हर एक का एक सेपरेट इक्विलिब्रियम कंडीशन बताया उन्होंने, जो हम देखने वाले आगे स्लाइड्स में इन डिटेल, राइट? हर एक मार्केट, मनी मार्केट का अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, गुड्स मार्केट का होगा, और लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम सिचुएशन एस्टैब्लिश होगा, राइट? सो दिस इज इंट्रोडक्टरी लाइंस फॉर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. Now moving quickly on to the assumptions. कौन कौन से assumption है जिस पे क्लासिकल थ्योरी डिपेंड करती है, या क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कौन कौन से assumptions लिए, उन्होंने माना कि ये ऐसा है, फिर उन्होंने थ्योरी, बिकॉज थ्योरी
We have to assume certain things as constant, and then we try to see the relation between variables, right? तो क्लासिकल थ्योरी में भी बहुत सारे कंडीशंस को कांस्टेंट माना गया है और फिर जो है थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया. तो फर्स्ट अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज they believe that there is always full employment or there is existence of full employment. वो ये मानते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है इन द लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लेकिन जो मार्केट फोर्सेस के थ्रू, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाता है. ये फर्स्ट अजम्पशन है क्लासिकल थ्योरी का. नंबर 2, laissez-faire capitalist economy without government intervention. Classical economists believe in laissez-faire economy. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, laissez-faire का सिंपल मीनिंग है नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरवीन नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमी में, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वो इस चीज को अज्यूम कर रहे थे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है, राइट? विद laissez-faire capitalist economy without government interference. Third assumption was they believe on closed economy without foreign trade. जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को उन्होंने एनालाइज किया विदाउट ट्रेड, बिकॉज they assume that there is no interference external sector, and within the economy they tried to establish the equilibrium. They tried to see the equilibrium condition in three market: money market and goods market and labor market. Okay, third assumption. Fourth assumption, they believed in perfect competition both in labor and product market. उनका ये अजम्पशन था कि मार्केट में, लेबर मार्केट हो चाहे या प्रोडक्ट मार्केट हो, वहां पे परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है. परफेक्ट कंपटीशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एफवाई. परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करता है लेबर एंड गुड्स मार्केट में. दिस इज द फोर्थ assumption by the classical economist. Fifth one, labor is homogeneous. Right, they assume that every labor is having same productivity, same capacity. हालांकि ये सही नहीं है, but still they assumed that, because if you take it as different, then different labor will contribute different, and then calculation problem. They assumed that every labor is contributing the same and they are getting the same wage, right? That's why, for the sake of simplicity, they assumed that labor is homogeneous in productivity and contribution wherever they are working, right? Next is wages and prices are perfectly flexible. Classical economists believed in flexibility of wages and all prices. Wage है, interest है, prices है, वो क्या है? Flexible है. और because of this flexibility only they tried to show that the market achieves automatic equilibrium, right, with the flexibility of wages and price. वो भी हम देखने वाले हैं next slides में with the help of diagram. Okay, so this is about the sixth point. Next is savings are automatically invested and equality between the two is brought about by the rate of interest. उनका मानना था कि whatever income is earned by the workers, by the people, that is consumed, and whatever is saved, that is automatically invested. तो saving जो है investment के बराबर होता है हमेशा, and this they have established with the help of rate of interest flexibility. क्योंकि rate of interest इसका भी हम जो है goods market का equilibrium में देखने वाले हैं with the help of diagram. So saving is automatically invested and it is equal to investment. That is another assumption by the classical economists. Then last point here, last assumption of classical economics is it assumes everything in the long run. Short run की बात नहीं करते, ये हमेशा long run में ये सारे conditions को देखते. That means more than 1 year. In economics, short period, generally 1 year period is assumed as short period, and more than 1 year period is long period.
सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स वट एवर वी विल स्टडी नाउ, तो आप ये समझ लो कि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना है। जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वेदर इट इज एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, जेएस मिल, पिग्यू, जो भी है, सारे इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि लॉन्ग रन में हम इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं, और लॉन्ग रन के बारे में वो they try to see all the markets, right? So these are some of the important assumptions of classical theory. Is this fine, students? Yes, sir. Okay, moving on to the now theory, explanation of theory, how the classical economist, explained theory of income and employment. So first, as I told you, the basis of classical theory is Say's law of market. And what is Say's law of market? Say's law of market is here: supply creates its own demand. सप्लाई, जो भी चीजें सप्लाई होती है वो अपना डिमांड खुद क्रिएट करती है। कैसे? यू रिकॉल द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट? यू हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तरफ जो है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन रिटर्न द फैक्ट इन रिटर्न फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे गेट, यू नो wages, salaries, interest and profit, और वही इनकम को they use to buy goods and services which they have produced from the farms. So supply creates its own demand. You look at here the para: when a producer produces goods and pays wages to workers, the workers in turn buy those goods in the market, right? In the process of production, income is generated, and same income is used to buy the goods and services which are produced by the workers. So the very act of supplying or producing goods implies a demand for them. जब भी प्रोडक्शन होता है तो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं होता है, बल्कि साइमल्टेनियसली इनकम जनरेशन भी होता है, राइट? और इनकम जनरेशन, व्हेन यू हैव इनकम, दैट मींस यू हैव capacity to purchase, you have capacity to buy. So demand is also created. That's why JB says that supply creates its own demand, right? तो ऐसे कंडीशन में क्या मान सकते हैं हम? जैसे वट एवर इनकम इज क्रिएटेड, y इज इक्वल टू c, तो ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम। whatever income is generated, that is used for consumption, so y will be equal to c. तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं yes, in the long run y will be equal to c, but if there is little saving, if there is any saving, this saving will be reinvested, right? This saving will be equal to investment, so there will not be any problem of deficiency of demand. डिमांड की कमी नहीं हो सकती है। जो भी इनकम जनरेट होता है वो इनकम, एक तरफ प्रोडक्शन होता है, दूसरे तरफ जो है डिमांड क्रिएशन होता है, और अगर सेविंग हो गई तो वो विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग विल बी इक्वलाइज टू इनकम, right? So this is how they tried to see that whenever good production take place, it not only produces goods but at the same time it creates demand as well. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें, जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, साथ साथ इनकम जनरेशन भी होता है लेबर का, और सेम income, that income earned by workers and people use for the purchase of those goods and services. So we can say that supply creates its own demand, and this supply creates its own demand is known as Say's law of market, right? It is known as Say's law of market. Supply creates its own demand. Therefore उनका मानना है कि देयर कैन नॉट बी ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन होने का सवाल नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम हो जाता है। अगर सेविंग हो भी गया तो री इन्वेस्ट होता है, और देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर शॉर्ट पीरियड में हो भी गया
तो वो जो है automatically with the help of goods market equilibrium, that demand and supply forces act in such a way that there will not be any disequilibrium, any unemployment in the economy, right? The problem of unemployment arises in the economy in the short period. ये इस चीज को मानते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, शॉर्ट पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, देयर कैन बी प्रॉब्लम ऑफ unemployment in the short period, but in the long run, because this classical theory is relevant and their assumption is classical theory is for the long run, long period के लिए होता है, तो long run में जो है economy will automatically tend toward full employment. कैसे होगा वो? demand and supply forces will try to equalize each other. वो भी हम देखने वाले हैं next coming slides में, कैसे with the help of diagram we will see it, the graph we will see how this is achieved. So this is what the Say's law of market and how Say's law of market is used to establish equilibrium in the market, right? So this is the basic fundamental here, right? Basic focus point. Whenever you are asked to explain classical theory, first thing you should write the introductory part, then moving on to the assumption, and thirdly start with the Say's law of market. Supply creates its own demand. Then you explain what is the meaning of this supply creates its own demand. Okay, is this clear, students? Students, is this clear? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, moving on to the next part now. You can see how this equilibrium is established. Look at here in the diagram. We have a diagram here. You can see this is production function diagram. You can see this Q is the function of N. Actually, output and employment are determined by production function. Classical economics क्या believe करते हैं कि जो output है, जो employment है, वो प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है, डिमांड फॉर लेबर पे डिपेंड करता है, एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है इकोनॉमी के अंदर. अभी प्रोडक्शन फंक्शन का उन्होंने सिंपल फंक्शनल इक्वेशन दिया है इस तरह से, Q इज द फंक्शन ऑफ K T N. लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम करते हैं कि K जो है ये कैपिटल स्टॉक कांस्टेंट रहने वाला है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहता है. कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी they took as constant, and then the quantity, this Q, the output, right, this depends on N. Q is the function of, here also in the diagram you can see Q is the function of N, because this K and T they have taken as given constant. तो ऐसी सूरत में जो आउटपुट है वो लेबर पे, एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड. अगर एम्प्लॉयमेंट इज मोर, there will be more output. Employment is less, there will be less output. ये ऐसा मानना है उसका. तो अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें, आप देख सकते हो ग्राफ में, on y axis we have this y axis, this is your y axis. On y axis we have output and on x we have employment. और ये वाला जो है आपका this is production function. तो आप देख सकते हो at n0, n0 लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आउटपुट कितना है? Q0 है. जैसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, NF हो गया, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ in the economy. At this level, output is Q1. After full employment, you can see this change. You see this change here. There is increase in employment, so increase in output as well. इसके बाद जो है आप देखो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यहां से ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये तो कम बढ़ रहा है, राइट. तो इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन दिस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. जैसे जैसे आप ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में,
शुरू में तो मार्जिनल रिटर्न इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट में, एंड आफ्टर दैट it increases at decreasing rate and then decreases, start decreasing, you know, the marginal productivity may become negative as well. So output is an increasing function of number of workers. जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने ज्यादा आउटपुट होगा. So output increases as employment increases, but after some point, more when more workers are employed, you have diminishing return. ये वाला पार्ट जो है आप गौर से देखो, यहाँ पे ये एफ लेवल के आगे अगर एम्प्लॉयमेंट जाता है तो प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करने लगती है, इंक्रीज, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसके बाद से फिर डिक्लाइन होने लगता है. दैट मीन्स नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट होने लगेगा. तो इन शॉर्ट इन दिस डायग्राम व्हाट इज एक्सप्लेन्ड, जो आउटपुट है वो फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, कीपिंग दी, यहाँ पे अजम्पशन क्या है, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट. ठीक है, तो आउटपुट आपका डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट पे. आउटपुट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स. जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ेगा. लेकिन आफ्टर सर्टेन पॉइंट, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कंडीशन में जो है क्या है, आपका आउटपुट बढ़ने का रेट जो है वो कम होने लगेगा. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर FY, दैट लॉ ऑफ डिमिनिश, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा, राइट. सो देयर इज diminishing marginal returns, right. So this is about the first aspect of classical theory, first diagram which you must explain in short. में इस स्लाइड का जीस्ट क्या है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है गिवन द टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल स्टॉक. अगर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल स्टॉक बढ़ा देते हो आप, तो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोडक्शन और आउटपुट बढ़ सकता है. लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम करते हैं कि के एंड दिस टी इज कांस्टेंट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Yes, okay. Moving on to the next, that is labor market equilibrium. Labor market में equilibrium कैसे establish होता है वो देखेंगे हम. Labor market equilibrium is established with the interaction of real wage rate, demand for labor, and is number of workers. Okay, demand for workers is the function of W upon P. W is नॉमिनल वेज एंड पी इज द प्राइस. नॉमिनल वेज को प्राइस से डिवाइड करने पे आपको रियल वेज मिल जाता है. रियल वेज इज नथिंग बट द रियल परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम वट एवर यू आर गेटिंग. ठीक है, तो डिमांड फॉर लेबर जो है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट. जैसे जैसे आप जो है demand for worker is decreasing function of wage rate. Who demands labor? Who demands labor? Labor is demanded by the companies, by the organization. ठीक है, लेबर का डिमांड जो है कंपनीज कर रही है ना. एम्प्लॉयमेंट कौन देने वाला है? कंपनी देने वाली है, राइट. प्रोडक्शन यूनिट देने वाला, फर्म देने वाला, राइट. तो डिमांड फॉर लेबर is decreasing function of real wage rate. आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर लेबर कर्व है, इट इज डिक्लाइनिंग. अगर वेज रेट ज्यादा होगा तो डिमांड फॉर लेबर कम होगी, और वेज रेट कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर ज्यादा होगी, राइट. सो डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना. इट विल डिक्लाइन. अगर ज्यादा वेज रेट, रियल वेज रेट आपका जो है, रियल वेज रेट, इफ W upon P, if it is more, you will get demand for labor as less, right. The demand for labor will be less, whereas supply of labor is increasing function of real wage rate. यहाँ पे देख सकते हो आप, this is supply for labor and this is for demand for labor curve. तो demand for labor is decreasing function of wage rate. Here on y axis we have wage rate, and
supply of labor is increasing function of wage rate. तो इसको let us see how equilibrium in labor market is established. Okay, so you can see this E point. If we start, so suppose we are starting from this point, this is the wage rate prevailing in the market, W upon P1. ये एक situation ले लेते हैं हम. W upon P is the real wage rate prevailing in this market, labor market. So is at this wage rate, how much is the demand for labor? It is D. Up to here, यहाँ से यहाँ तक हो गया. Right, this is your demand for labor. Whereas how much is the supply of labor? Supply of labor is from this much, complete. So which is more? Demand for labor is more or supply of labor is more? Yes, students. Demand for labor is more or supply of labor is more? Supply of labor. Correct. SN, this is supply of labor, is greater than demand for labor. क्योंकि वेज रेट ज्यादा है, रियल वेज रेट. जब रियल वेज रेट ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स वर्क करना चाह रहे हैं. राइट. सो इन दिस सिचुएशन देयर इज कंपटीशन अमंग वर्कर्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट. तो सम इतने सारे एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिल गया? यहां तक मिल गया, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. ठीक है, सबको जॉब नहीं मिल पाया. तो बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंग वर्कर्स, the workers will bid down the wage rate. ठीक है, ज्यादा ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे तो जो फर्म है, कंपनी है, वो बार्गेनिंग पोजीशन में होगा, वेज रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा. जो वर्कर्स हैं दे विल बी विलिंग टू वर्क इवन एट अ लो वेज रेट. ठीक है, तो आपका जो है डिक्लाइन होना शुरू होगा. जैसे जैसे वेज रेट डिक्लाइन होगा, हमने बताया कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट है. अगर वेज रेट डिक्लाइन होगा तो फिर वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डिमांड फॉर. यहाँ पे आप देखो ये ऐसे मूव करेगा डिमांड फॉर. एज यू मूव डाउन, योर वेज रेट इज गोइंग डाउन, डिमांड फॉर लेबर विल increase, whereas supply of labor with the decline in wage rate will come down. Okay, it will decline. क्योंकि जैसे जैसे वेज रेट कम होगा, some of the people will not be willing to work. ठीक है, so those who are not willing to work, they are not treated as unemployed. आपकी willingness होनी है. आप willingly job नहीं कर रहे, that is your problem. If you are willing and then you don't get a job, then you are treated as unemployed. So जैसे wage rate decline होगा, ये भी supply of labor decline होगा, and the point you will reach at point E where wage rate is W upon P naught. This W upon P naught is the equilibrium wage rate, and this point is known as labor market equilibrium point. इस equilibrium point पे, E point पे D N, demand for labor, is equal to supply of labor. Demand for labor is equal to supply of labor, right? So this is how equilibrium is established. So you moved from wage rate W upon P1 to W upon P naught. But somehow अगर देखो वेज रेट यहाँ पे नहीं टिका, यहाँ पे नहीं रुका, because it is dynamic, it keeps on changing. तो यहाँ रुकने के बजाय ये डिक्लाइन हो गया फर्दर. ठीक है, W upon P2 पे, because the pressure among workers was such that it could not stop at point E, it goes down. तो जैसे ही वेज रेट और कम हुआ, देखो आप, कम होते जाएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर एक इतना कम हो गया कि बहुत सारे लोग विलिंग नहीं है जॉब करने के लिए, वेरी लो रेट. तो ऐसे सिचुएशन में एट अ लोअर वेज रेट supply of labor is less, but at lower wage rate demand for workers are more. यहाँ पे देख सकते हो आप, demand for worker is D1 whereas supply of worker is S1. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ excess demand of worker है, demand for worker is excess, right, more.
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, व्हेन डिमांड फॉर वर्कर इज मोर, सप्लाई ऑफ वर्कर इज लेस, तो कंपनीज वर्कर्स को ज्यादा एम्प्लॉय करना चाह रही है, लेकिन वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं उसको। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वेज रेट जो चल रहा है मार्केट में वो बहुत कम है, बहुत सारे लोग विलिंग नहीं है वर्क करने के लिए। तो दिस विल prompt the employers or companies to increase the wage rate, है ना, क्योंकि उनको प्रोडक्शन के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा लेबर। तो वेज रेट को इंक्रीज, ऑटोमेटिकली कंपटीशन विल इंक्रीज बिड अप द वेज रेट, और जैसे जैसे वेज रेट इंक्रीज होगा देन अगेन रिवर्स सप्लाई मैकेनिज्म विल स्टार्ट। as wage rate increases, supply of labor will also increase, and again you will reach to this equilibrium employment level, that is NF. So this, equilibrium, disequilibrium keeps on going on in the market. We rarely achieve this equilibrium condition.